Good morning, students. Today's topic is control and coordination. Coordination is the working together of the various organs in a systematic manner so as to produce a reaction or response to the stimulus. मीन्स हमारी बॉडी के जो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं या ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो किसी स्टिमुलस के लिए एक अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट एक अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए साथ में मिलजुल कर काम करते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. नाउ ऑल दिस कोऑर्डिनेशन is controlled by our nervous system. For example, taking food for energy. Here food is the stimulus and by food in our system we get energy. That is the reaction, or we can say that is the function of our system in which there are so many systems participate. Now we will understand this example. As we take our food, their food is digested in our alimentary canal. Alimentary canal, or we can say our digestive system. Then there are the muscles of alimentary canal which help in digestion of food. So muscular system also helps in digestion of food. Then the process of digestion is controlled under our nervous system. Means as the food enters our alimentary canal, जैसे ही food alimentary canal के अंदर enter करता है इसका एक सिग्नल नर्वस सिस्टम के पास जाता है. देन नर्वस सिस्टम दैट इज़ द कमांडर ऑफ आवर बॉडी. वो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को, सारे ऑर्गन्स को और सारे सिस्टम्स को कमांड देता है. सो ऑल द सिस्टम कैन डू देयर वर्क. So nervous system, it controls all the functions of all the systems or all the organs of our body. So as the food enters our alimentary canal, the signal goes to nervous system. The nervous system gives command to our glands, all the glands, endocrine glands as well as exocrine gland. Now endocrine glands और exocrine glands क्या होती हैं? Endocrine glands secretes hormones. We will discuss it later. And exocrine glands, they secretes enzymes. So here we will discuss about enzymes because enzymes are very necessary for breakdown of food or digestion of food. So glands के बाद nervous system, then ग्लैंड वाला जो सिस्टम होता है दैट इज़ द एक्सोक्राइन सिस्टम. इट ऑल्सो पार्टिसिपेट टू गेट दिस रिस्पॉन्स. नाउ द सर्कुलेटरी सिस्टम वाई? बिकॉज आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड, द फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड कैपिलरीज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. सो सर्कुलेटरी सिस्टम, इट एब्जॉर्ब्स द फूड एंड इट ट्रांसपोर्ट्स द फूड टू वेरियस सेल्स ऑफ आवर बॉडी. देन वी कैन सी इनसाइड द सेल देयर इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विच गिव्स CO2, water and energy. So finally we get energy from the food. So for this oxidation of food, or we can see this is aerobic respiration, it takes place inside the cell. इसके लिए there is the need of the oxygen which comes from our respiratory system, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमारे पास मीन्स इट विल कम इनटू द सेल्स फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड. सो to get this response means energy from the food. Stimulus is food here and response is to get the energy. These many systems participate: alimentary canal, digestive system, muscular system of alimentary canal, nervous system means our brain which controls all the functions, glands,
endocrine glands, exocrine glands, circulatory system, that is the blood, and respiratory system. So all systems work in a systematic manner. They coordinate together to provide a response for a stimulus, and this is called control and coordination. And this is controlled by, or we can say this coordination is done with the help of our nervous system, and nervous system includes our brain. Brain is the headmaster of our nervous system.